Okay, shall I start? Yes, sir. Okay, so yesterday we have learned about that mass density of nucleus, right? Sir, recording. Yes. We have learned that mass density of nucleus, and we observed that mass density of nucleus is so high, right? That is of the order of 10 to the power 17 kg per meter cube. Okay. ठीक है ना? If that Earth is having same mass density as nucleus, na? We know that radius of nucleus is radius of Earth is how much? 6,400 kilometer, right? If the density of Earth is same like nucleus, then the radius of Earth would be around 240 मीटर, है ना? अर्थ का डेंसिटी अगर न्यूक्लियस जैसा हो तो फिर अर्थ का डेंसिटी अर्थ का रेडियस 6,400 किलोमीटर ना होके कितना हो जाएगा? ओनली 240 मीटर. And also we have seen that nucleon density, that is also very high, that is of the order of 10 to the power 44 nucleon per meter cube, right? And that is constant. Both mass density as well as nucleon density, both are basically constant, independent on nucleon, right? Nucleus, right? I mean, for hydrogen, how much it will be? It will be same as carbon, and for other also. Now today first we will discuss about nuclear charge density. And this is basically denoted by a rho of R. Okay. So suppose you have a nucleus. Suppose you have a nucleus. So the charge density of nucleus is not uniform. I mean, at the center of nucleus, charge density will be maximum. And if you go away from nucleus, that charge density will be reduced. And I can write that empirical formula of charge distribution of nucleus. Rho of Sir, R, yes. definition. Sorry, nucleus charge density. Yes, sir. Definition. Charge density means what? Charge per unit volume, right? Charge per unit volume of nucleus is known as nuclear charge density. Charge per unit volume inside nucleus is called nuclear charge density. Sir, Yes, so charge is associated with the nucleon, na? exactly. Then why you are taking? Not nucleon, that is depends upon only protons. Then what is your question? Okay, question was that we have done the nucleon density, na? So Yes. that I was taking in consideration. But That here, when we will discuss about the charge density, that is no longer all nucleon. Only you have to consider that proton. only proton. Okay. Okay, so I can write that charge density rho as a function of R, and R will be measured from center of that nucleus. So rho of R means what? That charge density inside nucleus at a distance of R from the center of nucleus. Suppose I want to measure the charge density here. Okay, and distance between this point and center, that is smaller. So that is representing this parameter, and that will be basically how much? Rho of 0, some constant charge density divided by 1 plus exponential R minus C by A. So rho naught is some charge, constant charge density. But what is important parameter or important thing? That is that denominator factor. We can clearly notice from this expression that charge density inside nucleus is no longer constant. So it will be maximum at the center. Charge density inside nucleus is maximum at the center, but if you go away from nucleus,
And if you measure the charge density, there will be decay. So what I can say, if you plot that charge density inside nucleus as a function of R, this side you have a row of R, and suppose this is the 0 is the point denoting the center of that nucleus. Okay, so obviously at the center you will have maximum charge density. Now there will be kind of this kind of plot. So just I'm plotting this function as a function of R. This rho R I'm plotting as a function of R. So if you increase that value of R from the center of nucleus, there will be decay of charge density. Okay. So can you explain सर ये one डिके thought? होती क्यों है? That is, that is because of Coulomb repulsion. जैसे जैसे थोड़ा समझ में नहीं आया कूलॉम रिपल्शन से कैसे? जैसे सपोज मान लो सेंटर पे आप कोई पॉइंट ये करोगे, सपोज दिस योर न्यूक्लियस है ना, यस सर। इस पॉइंट सेंटर पे एक न्यूक्लियन प्रोटॉन से सपोज मान लो, है ना, हाँ। सेंटर पे। फिर थोड़ा दूर में जैसे आपका करीब आओगे, है ना, यहाँ पे क्या होगा, आपका कूलॉम रिपल्सन के कारण आपका क्या होगा, ये आपका दूर दूर भागेगा प्रोटॉन्स। सर ये दूर दूर न्यूक्लियस के भाग अंदर का चार्ज डेंसिटी है। एग्जैक्टली, न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज डेंसिटी है ये। सर एक- एक्सप्रेशन में R माइनस क्या है लिखा हुआ है R एक्सपोनेंशियल रेट का? R minus C by A. Okay. C और A क्या है? I must write that A is some constant and the value of A is 0.52 femtometer. And C is called a halfway radius. Halfway radius. I mean at R equals to C, at small r equals to C, what will happen, that a rho of C will becomes, if we put in place of R, if you put C, what will happen, you will get that charge density that will be rho naught by. So C is called basically halfway radius. So I can show here also at R equals to C, what will happen, this is the point R equals to C, where charge density will be rho naught by 2. So here you will have charge density that will be rho naught by 2, this point. Okay, so why is this called empirical formula? Anyone? Why is this called empirical formula? ये कैलकुलेशंस के थ्रू बनाई Just this is, I mean, this formula is not derived, but this formula exactly fitting with experimental result. So पहले experimental result को देखा गया है, then they have write down that formula, but there is no derivation. That's why it is called empirical formula. Okay, so what you have learned that charge density, although that nucleon density and mass density inside nucleus is constant, but charge density is no longer constant. There will be decay if you go away from that center of nucleus. Is this clear what I'm saying? सर Yes. जैसे जैसे वो सेंटर से दूर जाता जाएगा चार्ज डेंसिटी कम होती है, Charge एक density. टाइम के बाद क्या उस पे जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन का कूलॉम रिपल मतलब कूलॉम फोर्स उस पे इफेक्ट नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन का कूलॉम फोर्स कहाँ पे इफेक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन तो काफी दूर पे है अभी। इलेक्ट्रॉन कहाँ है अभी? इलेक्ट्रॉन का जो यस सर वो दूर है, मैं मान रहा हूँ, मैं जनरल डाउट पूछ रहा हूँ। एक समय के बाद जब उससे बाहर आएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। क्लियर हो गया होगा। This distance is so long, right? यस सर। Yesterday I told you that if you calculate that ratio of radius of orbit of electron to that of radius of nucleus, that ratio will be how much? 10 to the power 5. So you can understand
कि ये पोर्शन इतना स्मॉल नहीं है, दैट इज वेरी लार्ज. Okay, it cannot capture. But yes, I'll tell you that there is a process called electron capture in radioactivity, that I'll tell. But it's not possible that this electron will go there and it will combine. But do you understand this thing, what I'm trying to say? Is this clear to all? Yes, sir. Okay, shall I erase this? Okay, now let us solve one problem based on this. So suppose they have given that charge density inside nucleus. That is, again, I'm writing same thing. 1 plus exponential r minus c by a. Okay. Okay. And it is given at r equals to r naught. Sorry, r equals to r on. Rho of r on becomes 40% of rho 0. And at r equals to r2, rho of r2 becomes 60% of rho naught. So you have to calculate that r on, you have to show that r on minus r2, and that will be 0.8 a. You have to show that. Can you able to solve? Okay, let us solve. Shall I raise this question? Shall I erase this? हाँ ना बोल दिया करो. Yes, sir. Yes, sir. So can I write this? That at, now I'm doing solution, okay? What I'm saying, can I write that at rho at r on, rho at r on, so this expression will become what? Rho 0 by on plus exponential r on minus c by a, and that will be 40% of rho naught. So 40% of rho naught is nothing but 40 by 100 rho naught. Okay, so this is nothing but, if I calculate cancel with 20, so it will become 2 and this will become 5. So simply it will be 2 by 5 rho naught. 2 by 5 rho naught. So this rho naught, I can cancel this rho naught with this rho naught. So at the end, I'll get on by on plus exponential r on minus c by a, and that should be equals to how much? कितना आ जाएगा ये? Are you getting? कितना आ जाएगा बताओ जरा. Anyone? 0.4. I have written this, right? 2 by 5 rho naught. So rho naught I have cancelled. 0.4. 0.4, yes, that I can write 2 by 5, right? I can write 2 by 5. So can I write from this expression that on plus exponential r on minus c by a, that should be equals to 5 by 2. Now if you bring that on this side, it will be how much? 3 by 2. It means exponential r on minus c by a, that is nothing but 3 by 2. And let us take this is your equation number 1. Okay. Now what about at R2? Tell me. So at R equals to R2, your rho 0 divided by on plus exponential R2 minus C by A. That should be how much? कितना given है? 3 by 5 rho naught. Exactly. 60% of rho naught. इसका मतलब कितना है?
3 by 5 rho naught. Again, I'll cancel this rho naught. And I can write that exponential R2 minus C by A कितना आ जाएगा? 2/3. कितना आ जाएगा? 2 by 3, right? 2 by 3. And let us take this is your equation number 2. Okay, now if I divide equation 1 by 2, what will happen? So on the left hand side, you will have exponential R1 minus C by A divided by exponential R2 minus C by A. That should be equal to how much? कितना आ जाएगा? 1. 4 by 9. 6/4. 9/4, sir. कितना आ जाएगा? 9/4. Exactly 9/4. 9 by 4. Now can I rearrange that left hand part? So I think this second term of numerator will be cancelled with second term of denominator, right? So basically from here I can easily write exponential R1 minus R2 by A, and that should be equals to 9 by 4. Is this clear? Yes, sir. Now if I take natural log, what will happen? If I take ln, so basically I'll get R1 minus R2 by A. That should be equals to ln 9 by 4. And if you calculate that value of ln 9 by 4, you will basically get 0.8. It means R1 minus R2, that should be equal to how much? 0.8 A. Is this clear? कितना clear है? Yes, sir. Okay. Okay. Now I'll use some concept of electromagnetic theory. Not electromagnetic theory, that is a part of electrostatic. So you have to show that electric dipole moment of nucleus is 0. You have to show that intrinsic electric dipole moment of electron is 0. So you know that charge distribution, right? I'm not writing again, but you have to show what you have to show. Tell me. You have to show that intrinsic electric dipole moment. Sir, Yes. क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? 0.8 A आ रहा है ना, R1 minus R2, that you have to show. एक ही वैल्यू भी I have given this question, right? I told you you have to show that R1 minus R2 that should be equals to 0.8 A. ये आपको शो करनी थी. एक ही वैल्यू नहीं 0.8 गिवन था आपको. एक ही वैल्यू नहीं गिवन था. की जनरल है ना, मतलब इसलिए ये? हाँ? सर एक ही जनरल वैल्यू अभी आपने बताई थी ना, 0.52 एग्जैक्टली फेम्टोमीटर. 0.52 फेम्टोमीटर होती है, बट आपको जो क्वेश्चन में बोला गया था, क्या बोला गया था, जो आपको दिखाना था इन द ऑर्डर ऑफ ए, है ना, इन टर्म्स ऑफ ए दिखाना था आपको. ओके सर. आपको इतना इतना आ रहा है कि नहीं, बताओ. ना तो आ गया. Yes, sir. आ रहा है. Okay. Now, in the next part, what I'm saying, you have to show that intrinsic electric dipole moment of nucleus is 0. I mean, dipole moment of nucleus will be 0. You have to show. To show that, I have to take or I have to borrow the concept of electricity magnetism. Okay, you know that how dipole moment defined for a sphere. आप कैसे define करते हो? If I am correct, it is like R cosine theta rho of R d tau. आप लोगों ने पढ़े हो? Yes.
ओके एंड यहाँ पे डी टाउ क्या है? R square sin theta dr d theta d phi. आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। So what is P here? यहाँ पे यही तो दिखाना था हम्म। आपको, जो डाइपोल मोमेंट है, Hmm. dipole moment of nucleus, that you have to show. Intrinsic dipole moment of nucleus, that will be 0. You have to show that. Now I can define the dipole moment. The intrinsic word here means what, sir? Intrinsic मतलब न्यूक्लियस का अंदर का जो न्यूक्लियस का जो डाइपोल मोमेंट है, that will be 0. That you have to show. Okay. है ना? So जैसे intrinsic word का इधर intrinsic कोई semiconductor, significance? you learn this thing, right? Intrinsic semiconductor. Semiconductor, yes sir. In हाँ, semiconductors, क्या yes. आपने पढ़ा वो बताओ? इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? जब कोई The डोपिंग वगैरह कुछ नहीं है, कुछ मिक्स yes नहीं है, sir. same Yes thing. sir. Yes sir. You have to correlate, right? Oh, This thing. okay, I sir. cannot say everything. Okay. Now tell me what will happen. What will be the limit here? R equals to 0 to क्या होता है limit? Capital R. Capital R. Then I'll take that theta limit. That will be what? 0 to 0 pi. pi. Then phi 0 2 pi. 2 pi. Okay. And in place of d tau, I'll take r square sin theta dr d theta d phi. Okay. Now if I write this, okay, so you will have a r component, right? You will have a r component. Basically I can write r equals to 0 to r. और यहाँ पे r क्या क्या रहेंगे आपका? एक तो r a है, एक r स्क्वायर है. So I can write basically r क्यू, right? r क्यू और कौन सा r का डिपेंडेंसी है? ये है. I can bring that rho r here. हमको पता है rho r किस फॉर्म में है, right? Rho r only depends upon what? R. r के फॉर्म में. हमको पता है rho r कितना होता है? Rho naught upon 1 plus e to the power r minus c upon a. Very good. Okay, so I separated that r part. Now I'll write phi part first. I'll write phi part. So 0 to 2 pi, then d phi. Okay, the next part I'll write theta. That will be 0 to pi. और यहाँ पे क्या रहेगा बताओ? थीटा का पार्ट में क्या है? Sin theta cos theta. Sin theta cos theta. Can I write like 1 by 2 sin of 2 theta d theta? Can I ये write? तो वैसे ही 0 हो जाएगा. हाँ तो इसीलिए तो 0 है ना. तो sin theta 2 theta का इंटीग्रेशन करोगे कितना मिलेगा आपको? 0. लिमिट रखाएगी तो इधर भी 0 Obviously और 0. पाई So पे भी 0. this part will give you 0, right? And multiplication of any number with 0, that will give you 0. So obviously p will be 0. Obviously p will be 0. दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, right? Do you get what I'm trying to say? Is this clear? हाँ ना बोल दिया करो ना. Yes sir. Yes. 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 Okay. Now next discussion about that your topic, that is, let us solve a problem. Okay. So suppose they have given you, कर लोगे ना इसके बेस पे प्रॉब्लम? So they have given you that nucleus. हाँ, they have given you iron nucleus. Okay, iron का मास नंबर ये कितना होता है? एटॉमिक नंबर 26. हाँ 26, right? They have given you that atomic number. This is the nucleus they have given you, iron nucleus. Okay, sorry. वो 50 है कि 56 है? हाँ आइसोटोप है, 56 है. आइसोटोप तो बहुत सारे पॉसिबल है ना. So this they have given you this nucleus. Okay, and also they have provided you the mass of this nucleus. Mass of this nucleus. Okay, let me write that mass. That is 5.85. They have given you 5.85 in terms of atomic mass unit. Okay, and R naught, that is they have given you 1.2 femtometer. Okay, ठीक है ना. और आपको क्या क्या कैलकुलेट करनी है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट radius. You have to calculate radius of
iron nucleus you have to calculate. Second part में आपको क्या calculate करनी है? Volume of this nucleus is how much? Third में क्या calculate करनी है आपको? Mass density of this nucleus. Okay, and then you have to calculate nucleon density. This is the mass density and this is the nucleon density you have to calculate. Okay, है ना? तो क्लास में थोड़ा बहुत किसी को डांट देता हूँ, डोंट वरी, है ना, आपकी भला के लिए ना, आपका सोचने का जो ये है ना तरीका वो बदल देंगे, है ना। हमारा ये जो है मोटिव जो है आपका सक्सेस के लिए है ना, डोंट माइंड। सर हाँ बोलो। सर हम लोगों ने जो देखा इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट न्यूक्लियस के लिए 0 होता है, वो किस चीज के लिए देखा हम लोगों ने? किसमें हेल्प होगा वो? नहीं, किसी में हेल्प नहीं होगा। देखो डाइपोल मोमेंट आपने पढ़े हो ना, जैसे ये प्रॉपर्टी में क्या पढ़ रहा हूँ अभी, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहा हूँ ना, तो न्यूक्लियस का प्रॉपर्टी आपको जानना जरूरी है ना, क्योंकि न्यूक्लियस का डाइपोल, अगर सपोज मान लो डाइपोल होता तो डाइपोल के लिए कुछ जो अगर कैसे आप चीजों को ये करोगे, कुछ नया चीज बनाओगे, है ना, कुछ चीज अगर यस डाइपोल का सर। भी कुछ एडवांटेज है ना, तो डाइपोल कैलकुलेट करोगे। अगर न्यूक्लियस का डाइपोल है तो कुछ काम में भी आएंगे, तो यहाँ पे कुछ डाइपोल है नहीं, है ना, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, तो हमको सारे चीजों के बारे में पता होना चाहिए। न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है तो उसका डाइपोल है कि नहीं वो भी जानना जरूरी है आपको। यस सर। ऐसे ऐसे सर हम लोग क्वाड्रुपोल भी देख सकते हैं। हाँ क्वाड्रुपोल आप देख के बताओ मेरे को, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर, ओके। अब इसको कैलकुलेट करो जरा, सर R इक्वल टू 4.59 फेम्टोमीटर, कितना आ रहा है आपका 4.59, 5 वेरी गुड। फेम्टोमीटर, So I can use this formula, right? R equals to how much? R naught a the की power, पावर 1 बाय R naught is given, that is 1.2 into a कितना है 56, right? Power 1 by 3, and obviously unit will be what? Femtometer. So if you calculate, you will basically get 4.59, right, into 10 to the power minus 15 meter, because we learned that 1 femtometer is nothing but 10 to the power minus 15 meters. Okay, now we'll calculate that second part. So we can easily calculate that volume, right, if we know that radius, because this nucleus is having spherical shape. So I'll write this 4 by 3 pi into r cube. Okay, so 4 by 3, then you will have 3.14. 3.14, and r is how much? R is 4.59 into 10 to the power minus 15 power cube. Okay, so we calculate, कितना आ रहा है? Anyone can tell me? 405.06 into 10 to the power minus 45. Very good. 405, right? 405.06 into 10 to the power minus 45 meter cube. Is this clear? Okay, next you have to calculate mass density, right? So how much will be the mass? कितना mass लिखोगे आप? Anyone? 9.27 into 10 to the power minus 26. 9.27 10 to the power minus 26. Okay, so they have given you mass, right? कितना mass? वो तो U में दिया। Exactly. So I can convert this mass into kg, right? Just if I multiply this mass into 1.66 into 10 to the power minus 26, right? 27, right? अगर इसको 1.66 into 10 to the power minus 27 से multiply कर 27 or 26? 27, right? 27. So if I multiply, I'll get that mass, right, in kg. So they have given you this mass in atomic mass unit. To convert this into kg, just you have to multiply 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. So I can write this 5.85 into 10 to the power, into 1.66 into 10 to the power minus 27. So that mass becomes in kg. And you have a volume, right? Volume is how much? 405.06 10 की पावर minus 45. कितना आ रहा है? 2.29. 2.29. 10 And की पावर unit 70. 2.29, 10 की पावर 70. 17 kg per meter. Okay. And next part is nucleon density.
So what will be the rho n? कितना आ जाएगा? Number of nucleon, that is 56. So this is your D part, right? 56 divided by volume. Volume is how much? 405.06 into 10 to the power minus 45, right? So how much you will get? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1.38 into 10 power 44. Exactly 1.38, right? 10 to the power 44 nucleon. But sir, Yes. What happened? Any doubt? yes sir, I have a doubt. Yeah, tell me. जो न्यूक्लियन डेंसिटी है हाँ, तो सर हम न्यूक्लियर की मास डेंसिटी लेते हैं ना? नहीं न्यूक्लियन डेंसिटी और न्यूक्लियन डेंसिटी मतलब क्या है? देखो, मास डेंसिटी और न्यूक्लियन डेंसिटी जो है अलग अलग है। न्यूक्लियन जो डेंसिटी है दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियन, बेसिकली इसको इस नाम में भी डिनोट करते हैं, न्यूक्लियन पार्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं, न्यूक्लियन पार्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियन डेंसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियन पर यूनिट वॉल्यूम। और मास डेंसिटी जो है दैट इज टोटल मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। Actually, I am confusing between these two हाँ, things. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपको मास डेंसिटी बोले तो फिर क्या क्या लिखोगे? मास पर यूनिट। मास डेंसिटी बोले तो सिंपल m/v रो इक्वल। हाँ, न्यूक्लियन मास डेंसिटी बोला जाएगा, ठीक है, या मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं। अगर आपको नंबर डेंसिटी पूछा जाए तो न्यूक्लियन डेंसिटी भी बोल सकते हैं या न्यूक्लियन पार्टिकल डेंसिटी भी बोल सकता है, ठीक है? सर यस। सर न्यूक्लियन डेंसिटी में A अपॉन V करते हैं ना सर? हाँ, A ये इज द मास नंबर। हाँ एग्जैक्टली, ये आपका मास नंबर है। और सर मास डेंसिटी में भी मास पर यूनिट वॉल्यूम करते हैं। मास नंबर और मास अलग अलग है ना। जैसे मास नंबर के साथ मास का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मास आ जाएगा। अच्छा मास ओके सर। नंबर के साथ मास का मल्टीप्लाई करोगे, कल हम लोगों ने किया था, राइट? ए इंटू एम पी। MP. हाँ, मास नंबर के साथ मास का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा? टोटल मास आ जाएगा, है ना? ओके तो सर दोनों ओके। अलग अलग है, ठीक है? ओके, चल आई प्रोसीड। क्या हम प्रोसीड कर सकते हैं? ओके, नेक्स्ट पार्ट। Yes. So nuclear mass density and nucleon particle density, you can understand from that terminology itself. Mass density मतलब mass per unit volume और particle density मतलब total number per unit volume. Okay, now next on problem I am going to solve. Okay, please do this problem. An electron scattered off proton to see if there is any internal structure of proton. An electron scattered off proton to see if there is any internal structure of proton or not. Okay. How much will be the minimum kinetic energy of electron is required? Okay, so what is the question? Question is, you are using electron as a probe to see that internal structure of proton. You are using electron as a probe
to see if there is any internal structure of proton or not. तो आपको प्रोटॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना होना चाहिए, आप बताओ, मिनिमम वेवलेंथ कितना होना चाहिए? बताओ, एनीवन? जैसे सपोज मान लो कोई एक एटम को देखना चाहते हो, तो आपको प्रोब साइज कितना चाहिए, होना चाहिए एटलीस्ट? एनीवन इन द क्लास? रेडियस के इक्वल। हाँ, किसी भी चीज को अगर आप देखना चाहते हो तो जिससे आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो उसको प्रोब कहा जाता है। तो उस प्रोब का साइज एटलीस्ट उस ऑर्डर में होना चाहिए। एटम को देखना चाहते हो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एटम कैसे देखता है, एक एग्जांपल है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। तो उसमें टिप यूज किया जाता है एटम को देखने के लिए, है ना। और टिप का जो साइज होता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम, है ना। तो कोई भी चीज आपको हमेशा यह ध्यान में रखना, रिसर्च में भी काम में आएंगे, किसी चीज को आपको देखने के लिए या इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई प्रोब यूज कर रहे हो, तो जिस चीज को आप देखना चाह रहे हो, है ना, सपोज मान लो आप एटम को देखना चाह रहे हो, तो जो प्रोब यूज कर रहे हो उसका जो साइज होगा दैट शुड बी स्मॉलर और इक्वल टू द साइज ऑफ एटम, ठीक है ना। अब जैसे आप प्रोटॉन को देखना चाह रहे हो, है ना, तो प्रोटॉन को देखना चाहते हो इलेक्ट्रॉन के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होगा दैट शुड बी एटलीस्ट जो प्रोटॉन का साइज होगा उसके बराबर होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे आपने इलेक्ट्रॉन को यूज किए हो, तो इलेक्ट्रॉन का एक वेवलेंथ होगा, और ये जो वेवलेंथ होगा अगर प्रोटॉन को देखना चाह रहे हो तो दैट शुड बी मैचेस विद द साइज ऑफ प्रोटॉन। Again, I am repeating. So you are using that electron as a probe to measure that proton structure. So when you are using that electron, है ना, तो इसका वेवलेंथ एटलीस्ट कितना होना पड़ेगा? एटलीस्ट दैट वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन शुड बी साइज ऑफ द प्रोटॉन। At least that size of wavelength of this electron should be equal to size of the proton. अगर वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का इससे छोटा भी है तब भी आप देख पाओगे प्रोटॉन को, प्रोटॉन का स्ट्रक्चर को। अगर वेवलेंथ प्रोटॉन साइज से बड़ा है तो आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाओगे प्रोटॉन का स्ट्रक्चर को। बट आई एम सेइंग अगर वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का साइज से छोटा है तब भी आप प्रोटॉन का जो स्ट्रक्चर है उसको इन्वेस्टिगेट कर पाओगे। बट अगर इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ का साइज प्रोटॉन से बड़ा है तो आप प्रोटॉन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यू कैन नॉट इन्वेस्टिगेट दैट। तो एटलीस्ट जो है वेवलेंथ कितना चाहिए आपको? शुड बी साइज ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का साइज कितना होते हैं? प्रोटॉन का साइज कितना होते हैं? एनीवन? So if I 10 to talk the about proton, how will understand that? I will take that example of hydrogen atom. So in a hydrogen atom, inside nucleus you will have only one proton, right? So if I talk about what I'm saying, if I talk about hydrogen nucleus में क्या है? एक ही प्रोटॉन है ना। Yes, sir. तो इस न्यूक्लियस का साइज जो होगा प्रोटॉन का साइज के बराबर होगा। सो आई कैन से दैट विल बी r0 a power 1/3 and size of proton, for size of proton what I'll do, I'll take a as a 1, so it will be a power 1/3. Okay, so that is nothing but r0, and we know that value of r0 that is 1.2 femtometer. So this is the size of proton, and what I am saying, to investigate that proton size, the wavelength of this proton, so wavelength of this electron should be at least 1.2 femtometer, or I can say 1.2 into 10 to the power minus 15 meter. इतना होना ही चाहिए। Is this clear what I'm saying? Tell me if you have any doubt. सर जब हम साइज की बात कर रहे हैं तो हमें डायमीटर नहीं लेना चाहिए रेडियस की बजाय? साइज की बात करो, डायमीटर भी ले सकते हो। मेन चीज जो है, हाँ, कभी कभी हम डायमीटर भी लेते हैं, कभी कभी हम रेडियस भी लेते हैं। बट रिमेंबर, जब हम इस तरह की प्रॉब्लम करते हैं जो मेन फैक्टर जो होती है दैट इज ऑर्डर।
आपको Yes, कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं दिया जाएगा जहाँ पे ऑर्डर का फर्क हो, है ना। आपका अगर Yes, sir. मान लो साइज की जगह पे आप रेडियस लिया, अगर डायमीटर भी लोगे ना, ये ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ेगा आपका। एंड मेन थिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट ऑर्डर। Okay, sir. Okay, now tell me what I'll do. Sir, Huh. sir, I have a small doubt, sir. Tell me, please. Sir, wavelength of electron should be equals to the size of proton, right? To Huh. measure. Hmm. So, Yes. sir, wavelength of electron here means what, sir? मतलब जैसे जैसे electron what I'm trying चल to say, वेव नेचर Yes, sir. कब आपका प्रोमिनेंट होता है, ये बताओ। कब पार्टिकल का वेव नेचर प्रोमिनेंट होता है? जब आपका वेवलेंथ स्मॉल हो। जैसे पार्टिकल काफी स्पीड में चलते हैं, yes, sir. तब उसका waves वेव मतलब नेचर radiate प्रोमिनेंट है उस टाइम, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। Oh, means electron is moving. देखो जैसे Okay, मैं sir. अभी खड़ा हूँ तो मेरा वेव नेचर ये नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, पार्टिकल नेचर। Yes, sir. जब एक इलेक्ट्रॉन काफी स्पीड में मूव कर रहा है तो उसका वेव नेचर जो है दैट इज सिग्निफिकेंट। Yes, sir. ओके। Okay, sir. Now what I'll do, I know that wavelength according to de Broglie hypothesis, wavelength is nothing but h by p, right? And p is nothing but root over twice. If I talk about that mass, if I talk about that momentum of electron, so I can write that momentum of electron is nothing but twice mass of electron, then kinetic energy of electron. Is this clear? It means what I can say, if I square, what will happen? Tell me. आप लोग थोड़ा ये करो, मेरे को हेल्प करो, है ना। Then what will happen? That whole class will be beautiful. Tell me. Lambda square is equal to Equals to square. Yes, h square divided by twice mass of electron and kinetic energy of electron. So from here I'll get that kinetic energy value, and that will be how much? H square divided by twice mass of electron lambda square, right? है ना? Okay, now I'll substitute that value. Okay, so we know everything, right now. So h is how much? 6.6 into 10 to the power minus 34 ka square. Okay, and then you will have what? Twice mass of electron, that is nothing but 9.1 into 10 to the power minus 31. And lambda is how much? कितना है lambda बताओ? 1.2 into 1.2 into 10 15. So 1.2 into 10 to the power minus 15, right? And of course there will be square. Is this clear? So if you solve this, basically you will get, let me write that. So you'll solve, you will basically get 1.66 into 10 to the power minus 7. Of course that unit will be what here? It will be in joule. Now I can convert this electron, this unit in electron volt. So what I'll do, just I'll divide by 1.6 into 10 to the power minus 19. So if you solve it, basically you'll get, let me write, 1.03 into 10 to the power 12 electron volt. So you see that in the question they ask you minimum minimum इतना होना ही चाहिए. Minimum इतना होना ही चाहिए मतलब क्यों? इससे बड़ा लोगे तो कम चलेगा काइनेटिक एनर्जी. इससे बड़ा लोगे का मतलब क्या है? वेवलेंथ तो और छोटा है, और वेवलेंथ छोटा है तो और अच्छा है. बट इतना आपको चाहिए ही मिनिमम. ठीक है ना? Are you getting what I'm saying actually? yes sir. मैं कह रहा हूँ कि आपको मिनिमम प्रोटॉन का स्ट्रक्चर देखने के लिए इतना एनर्जी चाहिए काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का. अगर इससे बड़ा हो काइनेटिक एनर्जी तो और अच्छा है. क्यों? इससे बड़ा कब होगा? ये सारे क्वांटिटी तो फिक्स्ड है. तो बड़ा कब होगा? जब लैम्डा और छोटा लोगे. लैम्डा छोटा हुआ. लैम्डा और छोटा लोगे तो और अच्छा है, अच्छे से देख पाओगे. ठीक है ना? So you have to please keep in mind that
कोई भी चीज अगर देखना चाहते हो, है ना, तो उसका जो साइज है और जिससे आप देख रहे हो उसका जो वेवलेंथ होगा दैट शुड बी ऑफ द सेम, राइट, इक्वल होना पड़ेगा एटलीस्ट. So if you permit me, then I can proceed further. Is it shall I erase and I can proceed? Can I proceed? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now next thing that I'm going to discuss, that I was saying you कि सपोज मान लो कि आपका ये गिवन है, अर्थ का मास गिवन है. अर्थ का मास जो है that is 6 into 10 the power 24 kg. और जो न्यूक्लियस का डेंसिटी दैट इज गिवन, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस दैट इज 10 the power 17 kg per meter cube. दिस इज गिवन. क्या गिवन है? अर्थ का मास गिवन है और न्यूक्लियस का डेंसिटी गिवन है. ठीक है. अब बोला क्या गया है? बोला गया है कि इफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ is same as the density of nucleus, then what will be the radius of earth? What will be the radius of किसका है? अर्थ का. It's very simple. What I'm trying to say, mass is given and density of nucleus is given, and they told you if the density of earth is same as the density of nucleus, then what will be the radius of earth? Okay, so how will solve? So you know density is nothing but mass per unit volume, right? Okay, it means volume will be nothing but mass by rho, and since earth is having spherical shape, so what I can say 4 by 3 pi r cube. That should be equals to mass of earth, that is 6 into 10 to the power 24 kg, and density is like what? 10 to the power 17 kg per meter. Okay, so you can bring this 4 by 3 pi in denominator and you can get that value of r. Okay, so if you solve this, you will basically get 10 to the power 42 meter. अब देखो कितना छोटा हो गया अर्थ, नहीं? Yes, sir. Is this clear? Yes, sir. Now please write some terminology. Sir, in this question, it is given the density is same and we have to find the radius. They told you that if the density of earth is same as the density of nucleus, then what will be the radius of your earth? Okay. And they provide you that mass. Okay. Okay, now. Okay. Now please write some nuclear terminology. Nuclear terminology. Nuclear terminology. Okay. So first, isotope. First, what is isotopes? Nuclei, right? Nuclei with same atomic number. Nuclei with same atomic number. Nuclei with same atomic number, bracket में लिखो Z, right? But different mass number. Nuclei with same atomic number but different mass number. Mass number के बाद bracket में लिखो A. ठीक? Are called isotope. Nuclei with same atomic number but different mass number are called isotopes. Example,
you have a hydrogen having 3 isotopes, on H on, on H on H2, and on H3. Now you can see all is having same atomic number, that is on, but different mass number. So they are basically isotopes. Nuclei with same atomic number but different mass number are called isotopes. Next, isotones. Again, nuclei with same neutron number. Nuclei with same neutron number are called isotone. Nuclei with same neutron number are called isotone. न्यूट्रॉन नंबर के बाद ये नोटेशन भी यूज कर सकते हो आप. न्यूट्रॉन विथ सेम न्यूट्रॉन नंबर, nuclei with same neutron number are called isotone. Example, you have a carbon 613 and nitrogen 714. We can see how many neutron is there 7. here. 7. So they are basically isotone. Nuclei with same neutron number are called isotone. Then you have isobar. Nuclei with same mass number. Nuclei with same mass number, bracket में A. Nuclei with same mass number but different atomic number. Are called isobars. Nuclei with same atomic number but different mass number. Sorry, the nuclei with same mass number but different atomic number are called isobar. For example, you have a carbon, atomic number 6, mass number 14, and you have a nitrogen, atomic number 7, mass number 14. So they have different atomic number but same mass number. So they are basically isobars. Okay. Last definition, that is mirror nuclei. Mirror nuclei दिख रहा है आप लोगों को? Mirror nuclei, or I can write this side also. 1 minute. Mirror nuclei. A pair of isobaric family, or you can say a pair of isobaric nuclei in which proton number and neutron number are interchanged. So pardon, sir. Yes, a pair of isobaric nuclei in which number of neutron number and proton number are interchanged. Neutron number and proton number are interchanged. What is the meaning of this? What is the meaning of this? Anyone in the class? मास नंबर सेम होगा पर Pair of isobaric family, it means you will have two nuclei. They have same mass number. Let us take number same. Okay, that is 11. Both carbon and boron both is having same mass number, because they told you that from isobaric family. It means they have same mass number, and we know that proton number or atomic number of carbon is 6, and boron is how much? 5. प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर इंटरचेंज का मतलब क्या है कि इसका जो प्रोटॉन नंबर होगा इसका न्यूट्रॉन नंबर के साथ मैच करेगा. वी कैन सी प्रोटॉन नंबर कितना है इसका
6 है। इसका 6. न्यूट्रॉन, इसका कितना है न्यूट्रॉन नंबर? 6. सो प्रोटॉन नंबर विल बी मैचिंग विथ न्यूट्रॉन नंबर, और इसका प्रोटॉन नंबर इसका न्यूट्रॉन नंबर से मैच करेगा। Okay, what I can say that proton number of this nuclei will be matching with neutron number of this nuclei, and proton number of this nuclei will be matching with neutron number of this nuclei. Okay, and for mirror nuclei you have to always, you can see for mirror nuclei n minus z, that will always be plus minus 1. You can check. यहाँ पे भी देखो कितना मिल रहा है n minus z, -1 मिल रहा है। यहाँ पे कितना मिल रहा है बताओ? +1. +1. So for mirror nuclei, that separation between or number of difference between number of neutron and number of proton, that will always be +-1. You have to keep in mind. Okay, so I think we should stop here. Okay, then we'll go for other topic. So tell me if you have any doubt. So this chapter is over. Sorry. So this chapter is over or left? No, it still is going on. Okay, but I'll not take that much classes like other teacher used to take 50, 55. Within 20 classes, everything will be finished. Okay. So after this particle physics class will also be there, no? Particle you didn't learn? So I was not there. Okay. There will be particle physics. Okay. If you have After this any only. query, please ask to Satish sir. Okay. He'll tell you. Okay, sir. Okay. I think we can stop here. सर Yes. Tell me. सर आपने कल जो बताया था ये एटॉमिक मास यूनिट से एमईवी में चेंज करना, Yes, that will आपको बहुत बार मिल जाएगा वो कन्वर्ट करने के लिए। उसमें अभी सर जस्ट बाइंडिंग एनर्जी में आने दो। बोलो। उसमें एमईवी अपॉन सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर 93.31.5 अपॉन स्क्वायर है, या फिर 931.5 एमईवी अपॉन सी स्क्वायर? एमईवी डिवाइड बाय सी स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, आपको पता है ना? सी स्क्वायर जो है एमईवी अपॉन सी स्क्वायर, मतलब ही है एमईवी डिवाइड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, उसको उस फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, थैंक यू।